Hello candidates, today's video is all about Bhabha Atomic Research Center recruitment, right? So in this video we are going to discuss the recruitment, advertisement and everything, eligibility criteria and all the things, right? So make sure you subscribe the channel for the career related videos, right, related to banking, related to government job, central government job and SSC railways, right? All type of government job details you will be able to find this in the. Let's get started with scientific officer and technical officer notification. So recruitment in Bhabha is done through two major programs, right? First one is OCES, yani Orientation Course for Engineering Graduate and Science Postgraduate, and second is done through DGFS, right? D for means Department of Atomic Energy and G for graduate fellowship scheme, right? So these are the two basic abbreviate, you can say vocabulary, whatever you can say, right? Full form. So are mandatory to know before filling the form, right? I'm going to discuss each and everything, right, for the all the type of candidate, right, things. So let's deep dive into the online application portal, right? This is the option they have given, that engineering background and science background, right? So according to your branch, right, you have to select, right? So let's say for you are from engineering background, so you have to click on this engineering, right? So when you click on that, next page will open, right? Bhabha Atomic Research Center, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बार्क OCES एंड DGFS इज कमेंस्ड, राइट? देखिए स्टार्ट हो चुका है, राइट? सो दिस इज नोटिफिकेशन दैट दे आर शोइंग इन द ऑफिशियल वेबसाइट. सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द डिटेल, राइट? सो यहाँ पे मेनू जो दिख रहा है, राइट, मेनू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा. बिगिनर्स प्लीज पे अटेंशन, राइट? सो दिस इज द मेनू, राइट? यहाँ पे सारा चीज डिटेल दिया हुआ, राइट? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, पोस्चर, हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हेल्प डेस्क, candidate link, candidate login, apply online, right? So each and everything is given in the menu, right? So suppose let's see the important information, right? यहाँ पे दिया हुआ trainee schemes and employment description, eligible disciplines, eligibility criteria, grade, pay scale, selection process, important dates, trainee school examination cities, about online examination procedure for booking exam slot, each and everything they have given in the menu, right? So let's open the first discipline, right? Eligible discipline. सो एलिजिबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच है, राइट? सो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो विच इज ME21, देन केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, ये ढेर सारे ब्रांच एलिजिबल है. क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल, राइट? सो दीज आर द ब्रांच विच आर एलिजिबल, राइट? We have till now discussed the eligible discipline. Likewise, you have to explore eligibility criteria, grade and pay scale, selection process, important date, right? So when you open all these, right, eligibility criteria, right, यहाँ पे सारा detail mention है, right? When you open that website, you will be able to see all these details, right? So guys, here it is, the official advertisement of Department of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Center, right, training school, invites engineering graduates and science postgraduate to apply recruitment as scientific officer in a group A post of government of India, right? So its academic programs OCES and DGFS, right? So OCES की बात करें तो ये 1 year का ओरिएंटेशन कोर्स होता है, राइट? एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 2 year इज फॉर DGFS, राइट? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम, राइट? वो 2 साल का होता है, राइट? अब बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल्स की, राइट? तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ कि जो स्टाइपेंड मिलेगी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, दैट विल बी 55,000, राइट? 55,000. एंड ग्रेड पे स्केल की बात करें तो ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर में ऑब्जर्व होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 56,000, राइट? 56,100 इज द पे स्केल, राइट? This is very huge, right, in the Barc. So make sure you subscribe the channel and hit the bell. And if we talk about the screening for selection interview, is done by 2 process, right? First जो online screening examination है उसके through, and second is gate score. So you can see that they have clearly mentioned that candidate will be screened for the selection interview will be based on the gate 2021 and gate 2020 score, right? So you must have the gate score, right? So this is all about the notification. Now let's apply the online application. Till now we have understood all the eligibility criteria, right, and all the details. Now let's apply online. So when you click on this online, right, so next page will open, right? One most important thing is that this is for beginners, right? I'm making detailed video, right? So those who don't know exact thing what we have to do. So fees यहाँ पे दिया हुआ, right, 500, right? And
all the details about branch and category, all the details are given, right? So यहाँ पे फ्लो चार्ट भी गिवन है, राइट? फ्लो चार्ट फॉर रजिस्ट्रेशन पहले प्राइमरी स्टेज होगा, उसके बाद OTP के थ्रू अप्लीकेंट आप लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट स्टेज, फाइनल स्टेज, सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसीजर पूरा होगा, राइट? देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, राइट? यहाँ पे जो बॉटम में दिया रहेगा वो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, proceed for registration, right? So this is the proceed for registration. So we have to click on this, right? After reading this all the details, right? जो भी डिटेल दिया हुआ उसको प्रोसीड करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है, राइट? सो व्हेन यू प्रोसीड इन द नेक्स्ट पेज विल ओपन, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स इन दिस केयरफुली, राइट? सो आई एग्री करूँगा यहाँ पे और नेक्स्ट पेज ओपन होगा, राइट? सो क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन, राइट? व्हेन यू सेलेक्ट देन केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर योर ब्रांच यू हैव टू सेलेक्ट। और इस तरह से मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करता हूँ, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल्स ओपन हो रहा है, राइट? क्वालिफाइंग डिग्री, सो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ एंड कंफर्मेशन नेम, राइट? सो दिस इज द प्रोसीजर, राइट? क्विक प्रोसीजर आई हैव शोन इन दिस वीडियो, राइट? सो इस तरह से आप आगे करके सारा डिटेल सबमिट करोगे, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करने के बाद फीस वगैरह सारा पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेना, राइट? सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, राइट? आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर freshers, right? Those who are giving this first time examination in Barc, right? So thank you and make sure to subscribe.